Hello students, today we will be dealing entirely about the processing of silk, means silk production. Dear students, as we know that in previous class we have studied about all of the steps involved in wool production, means we have studied about wool production and all the 5 different steps which involve in wool production. So dear students, similar to wool production, we have to study about all of the steps, several steps which is involved in silk production. So dear students, let's start learning about silk production. As we know that silk is a very valuable fiber and silk symbolizes wealth and prosperity. In earlier times, silk is considered as reserve fiber for all of the kings and monarchs. But now these days, silk is easily available for all of the section of the society. So dear students, let's start learning about silk production. First of all, what is the definition? Silk production means the rearing of silk worm for commercial purpose is known as sericulture. Means silk production is also known as sericulture. Sericulture is a process in which the rearing of silkworm for commercial purpose happen. So dear students, silk production also involves several steps, like whenever the female moth prepared for laying the eggs, lays the eggs, thereafter several steps which are taken in this process. So dear students, let's start from the first step, that is moth lays eggs. So students, first of all, female silk moths are prepared. Female silk moths are prepared for lays the eggs. So this is the first step. Thereafter, second step is that whenever the eggs hatch, they turn into larva. Then they turn into larva. Larva is also known as caterpillar. Okay. So caterpillar में convert होने के बाद जब egg hatch करेगा तो caterpillar में convert हो जाता है और convert होने के बाद उस टाइम पे उसको 4 months लगते हैं फीड करने में. मलबेरी लीव्स को प्रिपेयर किया जाता है, मलबेरी लीव्स के ट्रेस को प्रिपेयर किया जाता है वहाँ पे, ताकि जो लार्वे है, दैट मीन्स की जो कैटरपिलर है, वो सिल्क जो मॉथ्स ने एग को दिया, देयर आफ्टर वहाँ से कैटरपिलर यानी लार्वल फॉर्म में वो एग्स जो हैच होता है. फिर एग हैच करने के बाद जो कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, मीन्स लार्वल फॉर्म में आ जाता है, वो 4 months अप्रॉक्स अराउंड लगते हैं और उसमें वो मलबेरी लिप्स पे से फीड अप करता है ताकि वो ग्रो हो पाए. तो ग्रो होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्क वॉर्म में. वो सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. बट इस बीच में क्या होता है कि जो सिल्क वॉर्म है, दे सेट देयर स्किन 4 times. जस्ट लाइक आपने सुना होगा कि जो स्नेक है वो अपने स्किन को सेट करता है, वैसे ही सिल्क वॉर्म अपने लाइफ पीरियड में 4 times सेट करता है. और वो भी तब जब वो एग से निकलता है, लार्वल फॉर्म में आता है, उस टाइम पे वो अपने स्किन को 4 times, अराउंड 4 times वो सेट करता है. सो यहाँ पे एक मोल्टिंग प्रोसेस है. ओके, ये यही होता है, मीन्स की द सेटिंग ऑफ स्किन ऑफ growing silkworm is known as molting. If anybody asks what is molting, then your answer will be the setting of the skin of growing silkworm is called, its process is called molting. Okay, so let's move on. Dear student, जब मॉथ ने एग ले किया, देयर आफ्टर उस एग से जो लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एग हैच करके, यानी उसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, वो अब फ्री करता है किसके ऊपर, मलबेरी
लीव्स के ऊपर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिल्कवॉर्म है, ग्रोइंग सिल्कवॉर्म है यानी लार्वा जो है किस पे फीड अप करता है, तो आंसर विल बी मलबेरी लीव्स। ओके, वन मार्क क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जब सिल्कवॉर्म ग्रो हो जाता है देन दे टर्न इनटू कोकन्स। दिस इज द थर्ड स्टेप्स। दे टर्न इनटू कोकन्स एंड स्टार्ट स्पाइनिंग अराउंड देमसेल्फ। Spinning around themselves, start spinning around themselves means कि कोकन्स जो होते हैं अपने ही अराउंड, सिल्कवॉर्म जो होते हैं उनके कोकन्स अपने अराउंड स्पाइन करने लगते हैं। Thereafter ये जो है अप्रॉक्स 1 मंथ का पीरियड इनको लगता है कन्वर्ट होने में फिलामेंट्स में। तो जब कोकन्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो फिर वहाँ से जो फार्मर्स है वो फिलामेंट ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं? फिलामेंट। सो this process is called rearing, means reading is the process in which filament means the threads, silk fibers are obtained from the cocoons. This process is known as reeling. So dear students, आप इतना समझ चुके हो कि जो सिल्क प्रोडक्शन है उसमें several steps means approx around 5 steps involved होते हैं. The first one is moth lay eggs. The female silk moths are prepared for laying the eggs. Okay. Thereafter the eggs hatch into larva, means in the eggs hatch into caterpillar in the larval form, that means in larva. The larva start upon feeding upon the mulberry leaves. The mulberry leaves are traced into around the larva. So they start feeding on mulberry leaves and they shed their skin 4 times. Okay. So this is the second step. Thereafter the eggs has means the larva, the growing silkworm, then turn into cocoons. And cocoons around spinning around themselves. Okay, they start spinning around themselves. Thereafter the cocoons, from cocoons the farmers obtain the filaments, the thread, which are used in making the silk fiber. So this is how silk fiber is prepared. So fiber is the spoon into silk fiber. फिर ये जो फाइबर फार्मर्स ने ऑब्टेन किया कोकन से, उसे अब फैक्ट्रीज में, मिल्स में ले जाके कन्वर्ट किया जाता है सिल्क फाइबर में. सो दिस इज